Hello everyone. Today I am going to demonstrate how to insert an equation in Google Form. So before that we have to add one extension, Equation, name Equation. So first I will type Google Chrome extension, right? Then enter. After that you have to click on Chrome Web Store. After clicking on Chrome Web Store, now we have to click on search the store. We have to type Equatio. Type Equatio, right? The spelling of Equatio is Quuatio. Okay, then you have to enter. Then the first, this is the actually the required. So lot of mathematical equations extensions are there, but I feel this is the easy and the best one. So I'm going to demonstrate this one. First I'm going to add in my Chrome. So I'm adding add extension. Now it is checking. After checking, it will be going to add in our Google Chrome, right? So still it is checking and adding to my Google Chrome. In between I can start the Google form. So uh, again I am going back to my email ID. Yes, it is added. So we have to refresh once if it is added, right? So now here one small icon is there. This will show the extensions, whatever the extension we have added. So this is the extension of Equatio, right? So it is already added. Now I'm going to open the Google form, right? So from where you have to open the Google form, these 9 dots are there. From here, you have to click on this docs, right? After clicking on docs, again here 3 lines are there. So here forms are there. So what I did, I have uh, created one a bookmark here for directly to open the Google form, right? So now I am going to start one Google form, right? So after adding the Equatia, that extension, see this symbol will appear everywhere, right? So एक नाइन्थ क्लास का मैं डेमोन्स्ट्रेशन में दिखला रहा हूँ क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम टेस्ट. Okay, right? So first question, simplify. Now I want to add equation, so I have to click on this icon, insert maths, right? उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है. एक मिनट. So उस first of all, whenever we will start with Equatia, so it will ask to sign in with Google. So I'm going to sign in with Google. So I'm going to sign in with other account. So you can sign in with any other account which is working in this Google Chrome, right? Now we have successfully logged in the insert maths. Now see here one symbol is there, equation editor. If you take your cursor on this one, equation editor will come. So you have to click on that one, right? अभी मुझे 32 to the power 1 by 5 लिखना है, right? So I will write 32, ठीक है? 32 के बाद एक तो सिंबल है ये टू द पावर, जो कीबोर्ड में जो बटन है, राइट? 6 के ऊपर में है, 6 के साथ में है, शिफ्ट 6 जब प्रेस करेंगे, नाउ 1 by 5. See, it is automatically coming 32 to the power 1 by 5. Now into dot I am putting. Now 64 to the power, again shift 6 बटन दबाएंगे, 7 no 2 by 6, 1 by 6 I am typing, okay? Then is equals to ओके इतना ही कर लेते हैं. उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट मैथ्स. सो जब इंसर्ट मैथ्स में हम लोग क्लिक करेंगे, सो इट विल फॉर्म वन इमेज एंड इट विल इंसर्ट हियर.
ओके, इट विल इंसर्ट हियर, राइट। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। सो सपोज आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर क्वेश्चन। ओके, अभी ऑप्शंस मैंने नहीं दिया है। ऐड वन मोर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई same question I'm going to do it in other way, right? Again click on insert maths, right? यहाँ पर एक तो handwriting recognition वाला एक symbol दिख रहा है, so we have to click here, okay? और इसको मैं delete कर दे रहा हूँ जो पुराना वाला है। अब यहाँ पर माउस का यूज करके मैं फ्री हैंडराइटिंग ड्राइंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वेट, राइट। So 32, I want 1/5। एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। यस, 32 1/5 to the power 1/5 into, right, that is dot 64 to the power 1/6, right? अगर आपको टाइप करने नहीं आ रहा 32 to the power 1/5, you can use your free handwriting also. It will appear automatically here. It will recognize, and this is the best software what I have seen. So now insert maths. After inserting, again it will come here in the form of image. See, ये ऊपर में जो मैं डायरेक्ट किया था ये हैंडराइटिंग से किया। Now you can reduce the size or you can enlarge the size as per your wish. Okay, right? So I'm going to demonstrate one more. इसको निकाल देते हैं, right? Rationalize the denominator, right? So इसको भी मैं फ्री स्टाइल से मैं समझा रहा हूँ, पुराना वाला डिलीट कर देते हैं। Now the new one, I'm going to start 1/3 plus 2√2. See, the right side it is appearing. Now click on insert maths. So it will again insert in the form of image 1/3 plus 2√2, right? And चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। Rational simplify. Again I am clicking on insert maths. The old one I am going to delete. Okay, so now I am going to start 1/√3 minus √2 plus 1/√4 minus √3. If you are not able to write using mouse, you can use any writing pad, so that will be better. मैं भी फिलहाल माउस से लिख रहा हूँ। 1/√5 minus √4, like that you can make any question. See, and it is recognizing perfectly. Now after that you have to click on insert maths. The same equation, the expression will be inserted in the form of equation. This you can use for any class. Any class means 11th और 12th के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। I will show that also. चलिए मैं 11th क्लास का एक क्वेश्चन 12th क्लास का लिख रहा हूँ। Evaluate. Right, now I am going to click on insert maths. The old one I am going to clear. चलो, integration, right, 0 to pi/2 right, 0 to pi/2 sine square x, dx. Okay, see, it is recognizing perfectly. Now insert maths, click on insert maths, right? After clicking, then it will enter in, it will insert in the form of image, the same expression. So like that you can use this equation editor. This is a very good editor, and you can directly you can type, or you can use the handwriting. I will suggest the handwriting is the best, because it will recognize automatically. Okay,
So I hope you understand how to insert, how I am inserting the equations. Other than this also, there is one emoji that I would like to show you. Okay. Chrome extension again. So if you click on Chrome Web Store, I'm going to Chrome Web Store. Here, emoji. Okay, emoji I am searching. Emoji keyboard by Joy Pixels. Emoji keyboard. A lot of emoji symbols are there, right? See, lot of emoji symbols are there. So if you select anyone, if you install anyone, so how you can use these emojis that I'm going to demonstrate. See, I'm going to insert one equation. Simplify x 64 to the power 2. See, 64 to the power 2. 2 is not coming. Okay, so what I will do, I will click on here, right click, right click के बाद जो हम लोग जो insert किए हैं, that will come here emoji. Right, when you click on emoji, उसके लिए शॉर्टकट बटन है विंडो के साथ में. ओके, विंडो के साथ में आप एक मिनट में वो भी दिखा देता हूँ. राइट, विंडो प्लस पीरियड, दैट इज द शॉर्टकट बटन. ओके, राइट. अभी या तो राइट क्लिक करके निकाल लो. यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल है. दिस इज स्क्वायर. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन, सी इट विल कम हियर 64 स्क्वायर. तो अभी मुझे एक एक्सप्रेशन लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टराइज. राइट, सो फैक्टराइज में एक्स स्क्वायर. सो स्क्वायर चाहिए मुझे. सो क्या करेंगे, विंडो बटन के साथ में डॉट वाला बटन, डॉट फुल स्टॉप. सो इट विल अपीयर डायरेक्टली. ओके, सो स्क्वायर देन क्लोज प्लस 4x प्लस 4. एक छोटा सा मैंने टाइप कर दिया. सो यहाँ पर हम लोग क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, देखो. वी कैन इंसर्ट फ्रैक्शंस आल्सो, स्मॉल फ्रैक्शंस. राइट, जैसे इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आ गया 2/3, 5/6. जो फ्रैक्शन इसमें जो है इनबिल्ट जो है, दैट ओनली यू कैन यूज. राइट, अदर देन यू हैव टू यूज फॉर इक्वेशन. और दिस वन इज नॉट insert as an attachment. So this is the advantage what we are getting from this. Okay, so this is how to use emoji also in your Google form. So I am using emoji and the Equasia editor for preparing the Google form. Okay, so I hope you understand very well how to insert an equation in the Google form. So that's all for today's session. Thank you very much. So that's all for today's session. Thank you very much.